हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर सौरस क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं आईएसएस, दैट मीन्स इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का पेपर 2 एग्जामिनेशन का रिसेंट पेपर का सॉल्यूशन। तो आपको तो पता ही है, सबसे पहले हम ही लोगों प्रॉपर एक्यूरेट सॉल्यूशन करके ही वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब में स्टूडेंट लोगों के लिए। अगर आपको हमारे तरफ से कोई क्लासेस की ज़रूरत है या डाउट क्लियरिंग सेशन की ज़रूरत है, पीएससी क्वेश्चन सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, एनी ऑफ दैट, please don't hesitate, please call or WhatsApp on this number. Dr. Sarasa himself reply to your query through WhatsApp. So आपको तो पता ही है, स्टैटिस्टिक रिलेटेड और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सोर्सेस क्लास इज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अगर आप लोगों में से कोई भी तैयारी लेना चाहते हैं आईएसएस के लिए और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, प्लीज़ कॉल और व्हाट्सएप on this number. So don't waste time. This is the best time to take preparation with Dr. Saurabh's classes and boost up your preparation with Dr. Saurabh sir. So let's start with question number 4. Question number 4 में क्या बोला है? Consider xi is distributed as n of theta 1 and theta 2. That means I equals to 1, 2, 3 up to n, such that theta 1 and theta 2 both are unknown. So the CR lower bound is, CR means Cramer-Rao lower bound is. So how can I solve? So provides the lower bound variance of any unbiased estimator of parameter for parameter theta. The Cramer-Rao lower bound, that means Cramer-Rao lower bound, that means CR lower bound is defined as CRLB that means the variance of theta cap greater than equals to 1 by I theta. Here I theta is the Fisher information. Okay, so attaining this of the CRLB, that means an unbiased estimator achieves the CRLB if it is an efficient estimator, and for normal distribution the sample mean and the sample variance are known to be efficient estimator for the mean and the variance parameters respectively. For the mean and variance parameter respectively. So in given scenario, xi distributed in theta 1 and theta 2, and a theta 1 is mean and theta 2 is variance. So here theta 1 is mean and theta 2 is variance. So we have n independent observation, we have n
independent observation. So the efficient estimator in normal distribution, that means sample mean x bar equals to 1 by n summation of I equals to 1 to n xi, where xi is an unbiased estimator of theta 1, is an unbiased estimator of theta 1, and it attains the CRLB, Cramer-Rao lower bound. So the sample variance a square equals to 1 by n minus 1 summation of I equals to 1 to n xi minus x bar square. So is an unbiased estimator of theta 2. However, since the theta 2 is the variance, so a square is adjusted for degrees of freedom attains the CRLB for large sample sizes. So in conclusion, we say that the CRLB is attained for the mean theta 1 due to the efficiency of the sample mean, and the CRLB for the variance parameter theta 2 is not necessarily attained by the sample variance in small samples. So the correct answer is option B, attain for theta 1 but not for theta 2. यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है स्टेटमेंट के लिए. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू चैम्प.